Good morning, students. We have done two systems of exchange, foreign exchange. First one was fixed system. The other one we did was flexible exchange rate system. ठीक है. Third one that we are going to do is managed floating. Okay, so what was fixed exchange rate system? Under this system, the rate of exchange was fixed by the government. Okay, it was further divided into two: gold standard and Bretton Woods system. Under gold standard, the value of each currency was linked to gold. Under Bretton Woods system, value of each currency was linked to dollar, and dollar was the only currency that was linked to gold. Fixed system done. Next we did flexible exchange rate system. Under flexible exchange rate system, the exchange rate is decided by the demand and supply forces. We have done equilibrium rate of exchange, we have done impact of increase in demand, impact of increase in supply, we have done. Okay, so now the third system is managed floating. We have done two. We have done fixed system, we have done flexible exchange rate system. Now third and last one is managed floating system. See, it's a combination of flexible and fixed system. See how. Exchange rate is determined by demand supply forces. As in case of flexible exchange rate system, the exchange rate there also was decided by the demand supply forces. So in managed floating also, the exchange rate is determined by the demand supply forces. But RBI, Reserve Bank of India, intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of desired limits. But in some cases, Reserve Bank of India can interfere in this process. Which process? Demand supply process of determination of equilibrium exchange rate, so that the exchange rate does not slip out of the control of your economy. Okay, now this system is also known as dirty floating. Now there's a difference between two: managed floating and dirty floating. Managed floating is a system which is followed with rules and regulations, whereas dirty floating is a system which is followed without rules and regulations, where your government doesn't follow rules and regulations. Managed floating is a system where rules and regulations are followed. But as per your book, as per TR Jain, same definition has been given. They have told that managed floating, the other name of managed floating is also dirty floating. So we'll go with this. Now how does RBI manage the situation? Let's say value of rupee is depreciating in comparison to your foreign exchange. Now what does this mean? Value of rupee is depreciating. देखेंगे $1 was equal to ₹50. Now सिमिलर $1 अब हो गया है तुम्हारा ₹52 का. मतलब डॉलर तो भाई अप्रिशिएट हो गया, डॉलर महंगा हो गया, पर आपकी अपनी करेंसी की, हमारे रुपये की जो वैल्यू है, पहले हमारी अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई. पहले $1 आप देते थे तो ₹50 आ जाते थे. अब $1 देंगे तो 52 आएंगे. बट इससे देखो डॉलर की तो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, पर हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई भाई? कम हो गई, है ना, डेप्रीशिएट हो गई. सो नाउ व्हाट विल RBI डू? RBI विल सेल फॉरेन एक्सचेंज और लेट्स से डॉलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, RBI डॉलर्स को सेल कर देगा. जब डॉलर्स की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, मान लेते हैं सप्लाई बढ़ गई, किसी भी चीज़ की, चीज़ बहुत एक्सेस में है, तो उसका प्राइस क्या करता है बताओ? अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका प्राइस क्या होता है भाई? उसका प्राइस हो जाएगा फॉल. तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. ठीक है, दोबारा आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. when value of rupee is depreciating in comparison to foreign exchange और बहुत लिमिट के बाहर चला गया है, in that case RBI will sell dollars. ठीक है, when RBI will sell dollars in the market, supply of dollars or foreign exchange will rise. Whenever supply of anything rises, price of that particular thing or that currency will fall, rate of exchange will fall. ठीक है, now
let's move on to the topic, understanding of which is quite important so that you can solve your hot questions. Okay, so many of the students have problem in understanding what is appreciation of foreign currency, what is depreciation of foreign currency. I'll explain it with an example. Now what is appreciation of foreign currency? Now let's say dollar is a foreign currency, right? $1 earlier it was for 50 rupees. नाउ द सेम डॉलर, अब डॉलर महंगा हो गया, अब वही $1 हो गया 52 रुपीज़ का. ठीक है, डॉलर महंगा हो गया. महंगे होने का मतलब क्या है? एप्रीशिएट हो गया तुम्हारा फॉरेन करेंसी, डॉलर महंगा हो गया. अच्छा, एप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का दूसरा मतलब होता है इट्स इक्वल टू डेप्रीसिएशन ऑफ योर होम करेंसी. डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, हमारी अपनी करेंसी की तो वैल्यू कम हो गई ना भाई. ठीक है, हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई. सो एप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन ऑफ योर होम करेंसी. ये दोनों टर्म्स सेम होती हैं. नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन क्या होगी भाई फॉरेन करेंसी की? पहले $1 लेट्स से 50 का था, अब वही $1 क्या हो गया? सस्ता हो गया. अब वही $1 लेने के लिए आपको 48 रुपीज़ देने पड़ते हैं. डॉलर तो सस्ता हो गया, ठीक है, बट हमारा रुपी की वैल्यू क्या हो गई भाई? एप्रीशिएट हो गई है ना. हमारे रुपी की वैल्यू क्या हो गई? एप्रीशिएट हो गई, बढ़ गई. इट्स कॉल्ड एप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी. डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू एप्रीसिएशन ऑफ योर होम करेंसी एंड एप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन ऑफ योर होम करेंसी. आई हैव taught this topic because it will be asked to you in the hot questions. ठीक है, it will be helpful if you firstly watch this video, understand this concept, and then you start with your hot questions. Thank you.